Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantab Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 2 English textbook. Today we are going to start our lesson from unit 6, Mr. Turtle's Escape. Topic is parts of speech. SLOs of this lesson is recognize and use parts of speech. Page number 33 of your textbook, word study. Parts of speech. A part of speech tells us what a job word does in a sentence. Nouns, verbs, adjectives and pronouns are called parts of speech. In this lesson, we are going to discuss these four: nouns, verbs, adjective and pronouns. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होते हैं जो बताते हैं कि कोई जो वर्ड होता है सेंटेंस में उसका क्या काम होता है. हर वर्ड का अपना अपना एक काम होता है और हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस को बनाने में. पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके क्या है? नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव और प्रोनाउन, जो आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से विद एग्जांपल्स. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल डिस्कस नाउन्स हियर. एज यू कैन सी, a noun is a person, place, animal, thing or idea. You can see a girl here, a woman, a bus, a house, a notebook, a fish, a globe, a man here. Person can be man and girl, Steve, child, grandma, grandpa. Place will be Paris, city, school, home, Asia, space, kitchen. Animal like dog, cat, whale, lion, bee, bull, lizard. Things can be book, pencil, apple, flower, disease, shoe, cap. Idea आपका हो गया love, anger, joy, sadness, honesty, hate, jealousy. These are all idea, which is also the part of noun, which is also noun. We call it abstract noun, that you will learn in your next classes. So for now, this is enough. Person, place, animal, things and idea. These are the nouns. If you see around yourself, you will find lots of noun. आपको बहुत से noun देखने को मिलेंगे अगर आप अपने आसपास देखें. You are also a noun, a person. Now let's move forward. Now we will discuss verb. What is a verb? A word that tells what someone or something does, an action, word or word of being. Examples are sit, laugh, run and jump. These are actions like eating, listen, cry. These are all action. वर्ब हमें क्या बताता है कि कोई या कोई चीज कौन सा काम करती है. You can see this boy is running here. Running क्या है? अब इसका क्या है? Action है. He's doing an action. And this girl here is a little girl in a pink dress. She is laughing. This is also an action. So, verb indicates that someone or something does, an action word. बताता है कि कोई चीज या कोई इंसान कोई जब एक्शन करता है तो उसे verb कहते हैं. एक्शन में आपके बहुत सारी चीजें आ सकती हैं. cry, eating, listen, sit, laugh, run, jump, type, write, cook, everything. And these are the adjectives. We call it describing words, which describe noun. Adjectives क्या आपके noun को describe करते हैं? Its color, size, smell, quality, everything they describe. It can be both negative and positive. Like ugly, this thing here is ugly. Ugly is what? Yes. An adjective. It is describing this creature or animal here. That it's ugly. The girl here is pretty. The pretty is here what? Yes, an adjective. Word pretty is telling you that this girl here is pretty. Let me give you example in full sentence. The girl
is pretty. The word pretty is an adjective and it is describing the noun girl here. Girl क्या है आपका noun है और इसको describe कौन कर रहा है? Yes, the word pretty, which is an adjective. The boy is young. Young is an adjective. Here the man is old. Old is an adjective. These are all nouns. And these words here are what? Yes, adjective which describing the noun here. Dry, wet, sad, happy, big, small, short, long. These are all adjectives which is describing all these nouns here. And what are pronouns? We have discussed it in your previous lesson. Pronouns are I, you, we, they, he, she, it. It replaces the noun. Noun names the person, place, or thing. If we say Sarah is eating. अब सारा क्या है? फीमेल है. इसको रिप्लेस कैसे करेंगे? प्रोनाउन से. कौन सा प्रोनाउन हम यूज करेंगे? यस, फीमेल के लिए हम प्रोनाउन शी यूज करेंगे. शी इज ईटिंग. प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं? रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए. अगर हम एक गर्ल या मैन या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसका बार बार नाम नहीं लिखेंगे. उसकी जगह हम प्रोनाउन को यूज करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे. दे जो है किसकी तरफ इंडिकेट करता है? प्लूरल नाउन की तरफ, जब एक से ज्यादा लोग हों. वी आएगा जब हम अपनी बात कर रहे हों, जब हम अपने साथ किसी और के बारे में बात करें. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू स्कूल. लाइक you are also going to school and someone else is also going with you. You are not alone. If you say I am going to school, that you are alone. It indicates that you are alone going to school. But if someone else is going with you, you are going with your brother to school, you will say we are going to school. It indicates that the noun is not singular, it's plural. तो we और they आपको plural की तरफ इशारा करेगा. they किसी और की तरफ, कोई और दो बंदे, जैसे कि सारा और सना. are playing. तो सारा और सना को हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन they से. they are playing. No need to write again that Sarah and Sana playing. You can replace it by the pronoun they here. और it आपका animal या object के लिए आएगा. और ये बाकी सारे आपके लिए people और living things. And आपका it जो है क्या आएगा? animal और object के लिए. Now we have discussed the parts of speech in detail with examples. Now let's do the exercise here, page number 33 of your textbook. Question 1. Underline the parts of speech in each sentence and write their kind on top of the word. ये sentences हैं आपके B to F. You have to underline all the parts of speech which we have discussed in this lesson, and you have to write the name of that part of speech on the top of it. जैसे V है आपका, yes, it's pronoun, so simply write P here or pronoun. And play आपका क्या इंडिकेट कर रहा है? yes, verb, it's an action. और फुटबॉल क्या है आपका? yes, it's a noun. C है आपका सादिया reads book. अब सादिया क्या है? noun है. read क्या है? action है, verb. और books क्या है आपका? yes, it's again noun. sentence D. He opened the book. He आपका again pronoun. नाउन को रिप्लेस कर रहा है ना, कोई नाम नहीं है. अगर सादिया, अली, अहमद या कुछ और नाम लिखा होता तो आपका नाउन होता, लेकिन ये क्या है? रिप्लेस कर रहा है. ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन है, तो ये आपका प्रोनाउन होगा. ओपनड आपका क्या होगा? वर्ब होगा, एक्शन है. और बुक आपका होगा नाउन. सेंटेंस ई. ही टीच इंग्लिश. यस, ही इज अ प्रोनाउन हियर. एंड टीच here is what? Yes, a verb here. And English, yes, a noun here. A subject. English क्या है? Subject है, तो ये भी आपका क्या होगा? Noun में आएगा.
Sentence F है, the candy is sweet. Candy here is what? Yeah, a noun. And what is sweet here? Can you tell me? Yes, sweet is an adjective because it is describing the noun candy here. It is telling you that candy is sweet. It's telling you the quality, the taste of candy here. So it is what? Yes, sweet. It's an adjective. Sweet is an adjective here. This is your writing corner. It's an activity for you. Draw a monster and explain it with 5 adjectives in your notebook. आपने कोई भी monster यहाँ पर draw करना है, किसी भी witch की आप पिक्चर बना सकते हैं, घोस्ट की, या कोई और monster आप बना दें, कोई भी कार्टून कैरेक्टर जो कि थोड़ा सा हॉरेबल हो, दिखने में खौफनाक हो, monster हो, आप उसको ड्रॉ कर दें और उसको 5 एडजेक्टिव्स में डिस्क्राइब करें. फॉर एग्जाम्पल, इट्स ह्यूज, हॉरेबल, obnoxious, terrible, ugly. You can use these adjectives. ऐसे adjectives, ऐसे words, describing words आपने use करने हैं जो आपके monster को describe करें. I hope you are familiar with the describing words or adjectives because we have learned it in your previous classes too. So, it should be very easy for you to describe the monster. Think of a monster, just draw here and explain it with 5 adjectives. This is your home task from workbook, page number 25, listening and speaking. Listening and writing section here. As you can see here, this person here is doing an activity. He is what? उसने मछली के लिए कांटा डाला हुआ है पानी में. Then what? He is going somewhere. Then he caught a fish. And then what? He sold that fish. और फिर क्या है, उसको पैसे मिल गए, उसने फिर और चीजें ले ली. तो ये आपकी पूरी एक्टिविटी है. देखें इधर, father is requested to tell the story to the child with the help of the given pictures. Then ask him/her to retell the story in his/her own words. Father will also notice if the child has told the story in the correct sequence of events. तो ये एक्टिविटी आपने अपने किसी घर में बड़े के साथ करनी है. सीक्वेंस है, सीक्वेंस मतलब पहले कौन सी एक्टिविटी हुई, फिर उसके बाद कौन सी एक्टिविटी हुई. इस तरह पिक्चर को देख के जो है आपको पूरी स्टोरी सुनानी है. और आप खुद भी जो है स्टोरी का अंदाजा लगा सकते हैं पिक्चर्स को देख के कि पहले क्या काम हुआ, पहले कौन सी एक्टिविटी हुई, पहले उसने फिश बेची या पहले वो फिश पकड़ने गया या पहले उसको पैसे मिल गए. तो सीक्वेंस में आपने जो है स्टोरी को समझना है और कोई आपको घर में पढ़कर सुना भी सकता है. दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम टेक्स्ट बुक. यूनिट 6 का आपने टेक्स्ट पढ़ना है और इसमें से जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आज पढ़े हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है. जैसे कि सेकंड लाइन में आपका ग्रैब्ड जो है एक्शन है तो आपने उसके साथ वर्ब लिखना है. इस तरह जितने भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, आपने उसको अंडरलाइन करना है और इसको पूरा पढ़ना है. I hope you have enjoyed my lesson. Thank you. If you have any confusion regarding the lesson, you can rewatch it and do your homework.